Welcome to Ask MBA, guys. I hope you are preparing for CAT 2025 with the maximum efforts. Now, in this live session, I'm going to again take advanced geometry and mensuration as promised. So far we have taken more than 5 to 7 topics for your CAT 2025 preparation for quant and DLR and verbal section. Now, इस वीडियो में हम लोग सेशन में लाइव सेशन में एक और बड़ा टॉपिक कवर करने वाले ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के. बेसिक्स जो है वो ऑलरेडी मैंने इसके यूट्यूब पे लेक्चर्स डाल रखे. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू हाउ टू अप्रोच, हाउ टू हैंडल ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, एक बड़ा सा क्वेश्चन लेके. बट बिफोर दैट, दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, आई वांट यू गाइस टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल सो दैट यू डोंट मिस any video and exam update on any management entrance exams, right? इस वीडियो पे चैनल पे हम लोग बहुत सारे लाइव सेशंस डाल रहे हैं. फॉर एग्जांपल, जो बचा हुआ हमारा 80 डेज का कैट का प्रिपरेशन डेज है, हाउ टू यूज दोज डेज वाइजली. सो वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉपर बैच फॉर 80 डेज. You guys also can join us. Numbers are given in the description box. Just contact us. We'll get in touch with you. 80 days to CAT 2025 ये क्रैश कोर्स है, लॉन्च हो चुका है. 3 तारीख को इसका फर्स्ट लेक्चर भी हुआ है और आने वाले लेक्चर्स का मैं यहाँ पे पूरा आपको डेट्स एक बार दिखा देता हूं. फर्स्ट, लेट्स सी व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन दिस बैच. Live lectures, offline plus online. So I'll be taking, faculties will be taking all the lectures on Zoom or Google, whatever the platform is preferred. Then recorded sessions भी मिलेंगे आपको revision के लिए. Then you'll be going through with your GDPR training after CAT exam once you get your CAT result in the month of January. Then study material plus ebooks and full mock test, ताकि आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़े. Because as far your study is concerned, आपके mock test भी important है. Then personalized plan of action for every student. हम लोग आपको पर्सनल मेंटरशिप भी देने वाले. सो डजंट मैटर कितने दिन बचे, बट स्टिल वी विल वैल्यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट. स्मॉल बैच साइज फॉर डॉट सॉल्विंग. बैच साइज भी आपका लिमिट किया गया 10 to 12 स्टूडेंट, सो दैट वी कैन फोकस ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट. ठीक है, लिमिटेड सीट्स है, फटाफट कांटेक्ट करें, नीचे दिए गए. लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन डेट्स ऑफ योर अपकमिंग सेशंस. Day and date is given on the left hand side. You can visit Ask MBA YouTube channel and have a screenshot of this schedule so that you can refer in your future upcoming sessions. Timing is 3 to 5 p.m. First session is going to be about your reading comprehension, then percentage and average, and all the schedule is given in detail. So please visit Ask MBA YouTube channel, look at the sessions and attend each and every session, because ये sessions आपके YouTube पे भी आने वाले बहुत सारे. So every Thursday and Tuesday we are going live for CAT 2025 preparation for quant, verbal and DILR, and this is again another separate crash course for 2025 CAT. All right, so I hope guys I'm making sense. अगर जिसको join करना है please contact us, number दिए गए. Let's come back to your preparation. CAT में हम लोग आज geometry and mensuration करने वाले हैं. बहुत सारे questions इसके expected है, 3 to 4 questions इसके geometry के आते हैं. But trust me, ज्योमेट्री मेंसुरेशन में मैं पढ़ना क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट. यू डोंट हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज इफ यू लुक एट द सिलेबस ऑफ ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, बहुत बड़ा है. सारे फॉर्मूलास करना भी बहुत हेक्टिक बन जाता है, बट उसमें से कुछ सिलेक्टेड टाइप्स ही हमें करना है. फॉर एग्जांपल, फिगर्स इनसाइड फिगर, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब इनसाइड स्क्वायर, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस आते हैं. फिर स्फीयर के अंदर हम क्यूब बिठा देंगे, या फिर क्यूबॉइड के अंदर स्फीयर बिठा देंगे, या फिर लार्जेस्ट पॉसिबल डायगोनल ऑफ क्यूब इनसाइड हेमिस्फीयर या फिर स्फीयर. ऐसे कुछ उटपटांग क्वेश्चन जहां पे आपको फिगर्स को कट करके क्रॉस सेक्शंस एरिया पे बात करना होगा, वो टाइप के क्वेश्चंस हमें ज्यादा स्टडी करने हैं. नाउ इन दिस question again I'm going to have similar kind of cross section area question, जहां पे आपको फिगर को ड्रॉ कैसे करना है वो भी समझना होगा. ड्रॉ करके कौन से एरिया में क्या चेंजेस आएंगे, that is what we need to understand. First thing, let's understand the question first. An inverted right circular cone has radius of 9 cm. Now this cone is partly filled with oil which is dipping from a hole in the tip at the rate of 1 cm per hour. अब तक हमें क्या दिया, एक राइट सर्कुलर कोन दिया. सो लेट अस ड्रॉ राइट सर्कुलर कोन फर्स्ट. ये आपका राइट सर्कुलर कोन हो गया, ऐसा कुछ दिखेगा. राइट, डायग्राम जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा होगा आपके लिए. ऐसा कुछ बना लो, ठीक है. ये आपका होगा राइट सर्कुलर कोन. अब इसका रेडियस वगैरह दिया, रेडियस 9 सेंटीमीटर, तो ये आपका रेडियस हो गया 9 सेंटीमीटर का.
okay, and this will be a height of that given cone, the larger cone. A cone is partly filled with oil which is dipping from 1 cm पर आर. तो यहां से ये क्योंकि इन्वर्टेड था तो यहां से ये डिप हो रहा है. अब कितना डिप हो रहा है? 1 cm स्क्वायर पर आर. नाउ क्वेश्चन आगे जो भी होना चाहिए, तो अगर ये मुझे कितना भरा हुआ है, इट मींस आई नीड टू फाइंड आउट वॉल्यूम फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. तो जितना भरा हुआ है अगर वो मुझे पता चला, सो आई कैन फाइंड आउट द टाइम इन विच दिस एंटायर कोन विल बी एम्प्टीड आउट, राइट. तो वो पता करने के लिए आई नीड फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, and volume of cone is given by 1 by 3 pi r square h, right. This is the formula. I want you guys to learn all the formulas for cylinder, then cube, then sphere, cuboid, because all these formula are going to very useful for your geometry and mensuration questions. ठीक है, तो अब तक हमने कोन को ड्रॉ किया जिसका 9 सेंटीमीटर रेडियस था. हाइट हमें अब तक कुछ पता नहीं है, ये फिल है कुछ तो, लेकिन कुछ दिया है आगे. Currently the level of oil is 3 cm from the top. तो ये जो फिल किया हुआ है वो यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, मतलब लेट अस अज्यूम दैट दिस इज योर 3 सेंटीमीटर, राइट. तो टॉप से लेके जहां तक ये भरा हुआ है, सो ये अगर ये भरा हुआ है, सो यू नीड टू अज्यूम व्हाट शेप इट विल टेक. जो भी ये पार्ट भरा हुआ है ये कौन सा शेप लेना है? दिस विल बी इन द सर्कुलर फॉर्म, राइट. तो ये तो इसका सरफेस एरिया हो गया. जैसे this is the surface area of your larger cone, in the same way this is your surface area of a smaller cone. So if you can look at the diagram, यहाँ पे मुझे दो अलग अलग कोन दिख रहे हैं, एक बड़ा कोन और एक छोटा कोन. बड़े कोन का हाइट हमें नहीं पता, छोटे कोन का हाइट हमें पता चल जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर ये आपका 3 सेंटीमीटर है, सो आई कैन अज्यूम हाइट ऑफ द स्मॉल कोन बी h. सो बड़े कोन का हाइट क्या बन जाएगा? h+3. ठीक है, ये h+3 बन जाएगा यहां से, h+3, ये पूरा हाइट. ऑलराइट, तो हमें जो नहीं पता था वो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है. h let be the height of your smaller cone. Therefore, if this is 3 centimeter from the top, so the complete height for the larger cone will be h+3. ठीक है, आगे चलते हैं. Currently, the level of oil is 3 centimeter from the top and surface area is 36 pi. Surface area. So, which surface area the question is talking about? Surface area of the larger cone or the surface area of the smaller cone? Of course, जो भरा हुआ part है, that is your surface area of the smaller cone. So, this is given as your 36 pi. So, let's start with this thing. Surface area of a cone is given by only the surface, that is pi r square, because this is in a circular form. So this is pi r square, area of circle is pi r square, and pi r square is given as 36 pi. From this I can get r is equal to 6, right? Because I am going to use this r in find your volume of cone. Now I have the value of r, but I need value of h to find out your volume. First thing, why I need to find out this volume? क्योंकि ये कुछ ना कुछ पार्ट भरा हुआ है. Now the question is कि भाई इस भरे हुए कोन को खाली करने में कितना समय लगने वाला है, राइट. कितने समय में खाली हो जाएगा. सो आई नीड टू फाइंड आउट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द कोन इज फिल्ड. अब उस क्वांटिटी को मैं डिवाइड करूंगा उसके रेट से, उसके स्पीड से, जो मुझे दिया है यहाँ पे, ये 1 cm स्क्वायर पर आर. दैट इज व्हाई आई नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट वॉल्यूम. टू फाइंड आउट वॉल्यूम आई नीड बोथ आर एंड एच. सो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, दैट इज करंटली द सरफेस एरिया इज 36 pi. So from that I now get the value of r is 6. I'm going to use that value of r, but now further I need h, and you need to think how I can get h from this given figure, right? For that you need to understand the BPT theorem, basic proportionality theorem. The moment you see this kind of diagram, you need to understand, you need to extract, do I have use of BPT theorem, that is basic proportionality theorem, and BPT used on a triangle is cut from the middle or somewhere or the part of parallel to the base. अब जहां से ये ट्रायंगल दो अलग अलग हिस्सों में बच जाएंगे. क्या आपको यहाँ पे अलग अलग दो ट्रायंगल दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये देखो, एक बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, जहां से मुझे इसका एक रेडियस पता है और हाइट पता है. ओके, एंड नाउ ये जो बड़ा ट्रायंगल है ये पैरेलल प्लेन से कट किया गया है यहां से, राइट, द मिडल पार्ट. तो ये इसका हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और कोन का हाइट है मेरे पास h. नाउ आई कैन अज्यूम दैट ट्रायंगल A, B, C and triangle MNB.
So we need to find out the ratio and proportions for different sides of this both triangle, that is triangle A, B and C and triangle M, B and N. These are the two different triangles I am talking about. अब इस triangles में हमें sides को proportionate करना है, यही तो आपका basic proportionality theorem है. तो हम अलग अलग sides ले सकते हैं, उनके ratio equal कर सकते हैं, because these two triangles will be somewhere similar or congruent. Now what is congruency and similarity? You need to look at the session of geometry and mensuration where I have already explained what is congruency and what is similarity test. अब assuming that you know this test, यहाँ पे मैं triangle ABC और triangle NBN में अलग अलग ratios लेने वाला हूँ. Let me make this small first. ठीक है, अब मुझे चाहिए था H, right? So I can get this value of H using ये वाले रेशियो. फॉर एग्जाम्पल आई नो AC, so I can take AC divided by similar side of the smaller height, smaller cone, that is AC. then आपको यहां से लेना पड़ेगा MN, which is equal to what I need H. So to take H I need to consider small height of small cone. So इंस्टेड ऑफ यहाँ पे हमें H के लिए उसका पैरेलल, उसका अपोजिट साइड कौन सा होना चाहिए? बड़े वाले ट्रायंगल का साइड. अपोजिट माने उसी का प्रोपोर्शनेट दूसरा वाला हाइट. तो अगर स्मॉल ट्रायंगल का हाइट H है तो बड़े वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? 3 plus H. सो अगेन यहाँ से AC को हम करेंगे यहाँ पे AB, विच इज अगेन डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा MB. सो नाउ आई हैव टेकन रेशियो ऑफ टू डिफरेंट ट्रायंगल्स. ABC में से AC by MN, one of the side of the larger triangle divided by one of the side of the smaller triangle. तो ये रेशियो आ जाएगा. This is BPT theorem. अगर ये congruent आ जाएंगे, similar आ जाएंगे, so we can take these ratio as equal ratio. So just put the values of AC and MN. AC is 9 centimeter, where MN is M and N is radius. Radius of the triangle, radius of the smaller triangle is 6 centimeter. So 9 by 6 is equal to AB. AB is given by the larger height, that is H plus 3 divided by MB. MB is your small height, right? So from this I can get 3 and 3 2s are, and therefore 6 minus 3. H is also equal to 6, right? यहां से मुझे X का वैल्यू मिलने वाला है. So यहाँ से height of the smaller cone is H. You need to simplify this, coach. Now I have both the values of radius and H, which I am going to use to find out your volume of cone. So just find out volume of cone. Volume of cone is given by 1 by 3 pi r square H. After putting values, 1 by 3 into pi. Keep that pi value as it is because all the options are in terms of pi. So at least two of the options, A and D. So pi, then I can put value of r, that is 6 into 6, and height is 6. So this is 2, then 6, 36, 36 to the 72. This is 72 pi. Volume of the cone is 72 pi. And the question is, ये जो मैंने volume निकाला इसका, ये वाला volume, this is 72 pi. So now I have find out that this is filled 72 pi. अब इसे खाली करने में कितना समय लगने वाला है? That is what your question was, right? So 72 pi जो ये भरा हुआ है, I need to divide this value by the speed at which this is dipping from the tip, right? So speed कितना दिया था यहाँ पे? 1 cm square, and therefore time required to empty the filled part is equal to 72 pi divided by 1. Why? Because 1 is the speed at which this is dipping, right? So 72 by 1 is nothing but 72 pi hours. And in this question, your option 1 will be correct answer, that is 72 pi. So I want you guys to look at the question again, understand कि भाई मैंने ये diagram कैसे बनाया, why I am using BPT theorem, because BPT theorem is most useful theorem to solve this geometry and mensuration question. So the question was based on mensuration, but we are also using some part of geometry where triangles BPT theorem works. ठीक है? There are more few updates regarding this chapter कि भाई आपको सारे formulas कैसे याद करना है. I've already explained this on the same YouTube channel. So I want you guys to watch all those videos to understand this geometry and mensuration.
क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूले पीडीएफ में कवर करके यहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं. I hope this video made sense for you guys and helped you in your preparation for CAT 2025. Again, I am asking you to join us for your CAT 2025 crash course batch. All the details were given. यहाँ पे दिया है आपको अच्छा खासा डिटेल्स. ये सारे सेशंस होने वाले, सो जस्ट ज्वाइन दिस बैच, क्योंकि 80 डेज में आपका जो प्रिपरेशन होने वाला है, दैट इज व्हाट आई वांट यू गाइस. तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले, सो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर टू दोज हु नीड दिस वीडियोस, राइट? See you guys next week, same time 9:30 with another important topic of concept section. Thank you.